So very good evening everyone. In this video I am going to discuss about what approvals are required to conduct clinical trial in India. As earlier we have discussed about how to submit IND applications in India to start a clinical trial, what data are required to submit in the IND application. So secondly, we categorize actual trials into two categories. One is regulated trial and another one is non-regulated trial. So regulated trials means whatever the data you will generate by conducting these clinical trial, you have to submit that data to regulatory authority to take the approval for marketing of product. And also to start such type of trials, regulated trials, you should have this regulatory approval to conduct a clinical trial. Whereas in non-regulated trials, these approvals, regulated approvals are not required. So basically, I am going to discuss about what types of approvals are required to conduct clinical trial in India. So as I told you, one category is regulated trial, another one is non-regulated trial. So basically, regulated trials we are conducting when we are developing any new chemical entity and we want to market that particular drug or molecule. After completions of clinical trials, we are going to submit NDA application to the regulatory authorities to take market approval. So in that case, that we consider that is regulated trials. And another one, suppose some medical students are doing work or some reproposing or some other kind of things where they are not going to claim or to submit that data whatever they will generate to get a regulated approval. So that is non-regulated trials. So to conduct a regulated trials, you must have DCGI approvals in India. I am talking about India. So you have to submit your IND applications to the CDSCO and you should have that approval letters by the DCGI, Drug Control General of India. Apart from that, your trial should have your IEC approval, that is the Independent Ethics Committee approval or Institutional Ethics Committee approval is must. Apart from these two, your trial should be registered in the CTRI, that is the Clinical Trial Registry of India. It is also mandatory. So these three things are required, is mandatory to start a clinical trial in India, particularly if you would like to start a regulated trial. Another one for non-regulated trials, these two approvals are required, but DCGI or regulatory approvals is not required because whatever the studies you are going to conduct or whatever the data you will generate, you are not going to submit that data to the regulatory authority to get any kind of approval. So that is non-regulated trial. As I told you, some examples like MBBS, MD students are doing their project work or thesis work, that we considered as a non-regulated trial or a academic trial. To start an academic trial, there is no need to take a approval from the CDSCO or DCGI approval, but your protocol should be approved by ethics committee, human ethics committee approval is required, as well as your trial should be registered in the CTRI, that is the Clinical Trial Registry of India. So that two approvals are required to conduct a academic clinical trial also. So even though now earlier when we are submitting we are going to start a studies, particularly the observational studies where we are not going to give any interventions to the patients or volunteer. So earlier the ethics committee approval is not required, but now these ethics committee approval is required whether your study is observationals or not observationals. It's not. You have to take the permissions from the ethics committee because that is required. The reason is the investigator are telling that their study is observational studies, but they are giving interventional. It has been observed these all type of practices. So that's why it's required to take a ethics committee approval, whether it is your observational studies or interventional studies. So thank you. I hope you understand what kind of approvals are required
to start a clinical trial in India. And according to the nature of trial, according to your studies, you should have the permissions to start that clinical trial. So thank you. If I will explain a little bit in Hindi. So basically आपने हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि आईएनडी एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी को। रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको एनालाइज करती है और आपको प्रोटोकॉल अप्रूव या डिसअप्रूव या मेजर या माइनर मॉडिफिकेशन के लिए कहती है। तो बट क्वेश्चन ये है कि क्या एक अप्रूवल अगर हमें मिल जाए तो क्या हम क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं। और फिर और हमें किस तरह की अप्रूवल जरूरी है किसी भी ट्रायल को स्टार्ट करने के लिए? तो बेसिकली आपका एक रेगुलेटरी ट्रायल, एक नॉन रेगुलेटरी ट्रायल, दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिए। रेगुलेटरी ट्रायल जैसे कि नाम खुद ही बताता है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी की जिसके लिए अप्रूवल की जरूरत रहेगी वो रेगुलेटरी ट्रायल। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमें कोई कंपनी न्यू केमिकल एंटिटी को डेवलप कर रही है, मार्केट में उतारना चाहती है, तो उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी का अप्रूवल मस्ट है, उसके बिना वो स्टार्ट नहीं कर सकता क्लिनिकल ट्रायल। अगर स्टार्ट कर लिया, बाद में अगर डाटा सबमिट किया, तो वो रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिलेगी, तो इज रिक्वायर्ड। या फिर कोई कंपनी जो है वो चाहे मेडिकल डिवाइस पे काम कर रही है, चाहे हर्बल मॉलिक्यूल पे काम कर रही है, पर अल्टीमेटली वो रेगुलेटरी अप्रूवल चाहती है मार्केट करने के लिए, तो उसके लिए आपको सॉरी सॉरी आपको अप्रूवल की जरूरत रहेगी रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब उसके अलावा आपको क्या जरूरत रहेगी? आपका प्रोटोकॉल जो है वो अप्रूव होना चाहिए इथिक्स कमेटी से भी, और आईसीएमआर की जो वेबसाइट्स जो उन्होंने तैयार की है, सीटीआरआई, दैट इज हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहाँ पे सारे ट्रायल रजिस्टर्ड होते हैं, तो वहां पे भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके ट्रायल का, और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिले। तो रेगुलेटरी ट्रायल के लिए आपको तीन तरह की अप्रूवल चाहिए, एक तो डीसीजीआई की अप्रूवल, एक इथिक्स कमेटी की अप्रूवल, और एक आपका ट्रायल सीटीआरआई वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब दूसरे आ जाते हैं हम नॉन रेगुलेटेड ट्रायल, जो कि पर्टिकुलरली एकेडमिक ट्रायल होते हैं, जैसे कोई एमबीबीएस का काम कर रहा है या एमडी में काम कर रहा है, तो क्योंकि एमडी की थीसिस के बेसिस पे वो रेगुलेटरी को नहीं बोलेगा कि मुझे मार्केट करनी है ये मॉलिक्यूल या जो भी है, तो उस केस में हमें रेगुलेटरी अथॉरिटी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आप अपना ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप देखना चाहते हो कि ये जैसे कोई भी ड्रग है, जैसे मेटफॉर्मिन है, आप बोल रहे हो कि मैं इसी सेम डोज पे जो कि डायबिटीज के लिए यूज होती है, मैं इसको डिप्रेशन के लिए भी देखना चाहता हूँ, मीन्स साथ साथ में पेशेंट्स को डिप्रेशन के लिए ऑब्जर्व करना चाहता हूँ जो डायबिटिक पेशेंट्स, तो आप कर सकते हो। पर वो जो भी डाटा जनरेट करोगे, अल्टीमेटली आप ये नहीं बोल सकते कि अब क्योंकि मेरा डाटा अच्छा आया, मैंने सब कुछ अच्छा काम किया, तो अब मैं इसको मेटफॉर्मिन को इसमें डिप्रेशन में भी यूज करना अप्रूवल लेना चाहता हूँ। नहीं, रेगुलेटरी अथॉरिटी आपका अप्रूव नहीं करेगी, क्योंकि रेगुलेटेड अथॉरिटी तब अप्रूव करेगी जब आपने उससे परमिशन ली वो कंडक्ट करने के लिए। इट शुड बी क्लियर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो उस केस में जब हम एकेडमिक ट्रायल्स करते हैं, जस्ट एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, जस्ट एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोलते हैं कि जस्ट देखना चाहते हैं कि काम कर रही है नहीं, बट उसके बेसिस पे हम रेगुलेटरी को नहीं बोलेंगे कि आप मेरा ये अप्रूव कर दीजिए, जस्ट टू जनरेट प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि क्या ये काम कर रहा है, क्या ये रूट काम कर रहा है या नहीं, क्या वो, उसके लिए आपको सिर्फ इथिक्स, बट इथिक्स कमेटी जो आपकी ह्यूमन इथिक्स कमेटी का अप्रूवल आपके लिए जरूरी है। और दूसरी चीज, आपका ट्रायल जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए सीटीआरआई में, दैट इज द क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये दो की अप्रूवल, तो आप अपना एकेडमिक ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। So I hope everyone get an idea what kind of approval are required. So thank you very much.